हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आल्स के टीवी। आज आपके लिए मैं नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। दिस क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर कंट्री एंड यू शुड से वेयर इट वाज, व्हेन यू वेंट देयर, हु वर विद यू, व्हाट यू सॉ एंड डिड देयर एज अ टूरिस्ट। कहते कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले बारे में बताओ जो आपकी कंट्री में हो। एंड ये क्यूज आर, ये कहते कहाँ पे हैं, आपने वहाँ पे क्या किया एंड किसके साथ गए थे, एंड आपने क्या देखा और क्या किया एज अ टूरिस्ट। इस क्यू कार्ड में आपको कोई भी आइडिया मिल सकता है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप अमृतसर पे ऊपर बना सकते हो, चंडीगढ़ के ऊपर बना सकते हो, एनी सिटी दैट यू वांट टू एक्सप्लेन इन दैट क्यू कार्ड। ओके, जो मैंने बनाया है मैंने जम्मू एंड कश्मीर पे ऊपर बनाया है। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्यू कार्ड। दिस इज अ जनरल लाइन, इट इज ट्रू दैट। ये मैंने फ्रेज यूज किया है, आप कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हो यहाँ पे। टूरिज्म इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एक इकोनॉमिक का पार्ट है, एक्टिविटी है जो हमें कंट्री में डेवलप कर रही है। ओके, सिग्निफिकेंटली जैसे हम कहते हैं एडवर्ब की तरह हम यूज करते हैं यहाँ। Tourist attractions are some of the most distinguished characteristics of a country or a city. कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है वो कहते हैं अलग डिफरेंट पार्ट होती है हमारी सिटी या कंट्री का। दिस प्लेसेस आर लैंडमार्क्स एंड आर अ विटल पार्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी कल्चर। कहते ये हमारा पार्ट होता है लैंडमार्क का एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लोकल कम्युनिटी कल्चर के लिए। Some of these tourist attractions are famous across the world, whereas others are more obscure but enriching nonetheless. कहते कुछ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा ही फेमस होते हैं वर्ल्ड में, बट कुछ जो होते हैं जो कहीं इतने ज़्यादा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जैसे हम कहते हैं इंडिया गेट हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ये हमारे मोस्ट कहते हैं वंडरफुल फीचर्स हैं हमारी कंट्री के। Okay, a particular tourist attraction that I would like to talk about is a Shalmar Bagh. The Shalmar Bagh is located in the Srinagar, which is the capital of Jammu and Kashmir. This place is a popular tourist destination across India and around the world. The Shalimar Bagh is a Mughal garden that was built in 1619 by the Mughal Emperor Jahangir for his wife Noor Jahan. यहाँ तक मैंने उसकी क्या लोकेशन बताई है कि कहाँ पे वो लोकेट कर रहा है, किस लिए बनाया था एंड कब बना था। ओके, नेक्स्ट है, आई विजिटेड दिस इंस्पायरिंग डेस्टिनेशन विद माई फैमिली एंड सम ऑफ फैमिली फ्रेंड्स इन 2017 on a trip to Kashmir. Although the trip included several famous tourist spots and destinations, but Shalimar Bagh happened to be one of the most breathtaking places on the entire trip. प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट प्लेसेस ही आएगा, प्लेस नहीं आएगा। The day we visited Shalimar Bagh was on the fifth day of the trip, and everyone from both families was present. We also happened to have a tour guide along with us to help us get where we wanted and also to introduce us to new places. One of the most striking features of Shalimar Bagh was its sheer size. Sheer size होता है जैसे हम large size कह देते हैं। It took us nearly 3 hours to visit all the interesting places within the garden itself. Okay. There were quite a few places of historical interest in Shalimar Bagh that our tour guide informed us about in details. We also tried the local food there, which was delicious. All in हम तब यूज करते हैं जब हमने एंडिंग करनी हो। The visit to Shalimar Bagh was a memorable experience and one I will always cherish. ओके, ये मेरा आइडिया था, इसके अलावा आपके पास कोई और आइडिया हो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। For more updates with the Isles and Centrally Ask You card, please subscribe my channel and stay tuned. Thank you.